1 minute, sir. No, no, Sir, please. I must Conclude, express please. my gratitude to our Shri Umesh Patel. मैं अकेला हूँ छोड़ दीजिए There was the constitution on the 4th of December 2021 when my armed forces, special forces of the 21 special force paras, they killed 6 civilians. खुलुमबाय रायजोफोर नैबे बेलारोम समावहाय आङो फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैलायबाय जोंनियावहाय गारबोनाय समफोरनिफ्राय जि दिननिफ्राय गोदानै एमपि दैथाय हरदों बिनिफ्राय गोबाङा गोबां बाथ्राफोर सावरायलायनायखौ जोङो नुबाय थादों दा बेखौनो नोजोर लाखिनानै आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंबो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों रायजोफोर नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना लाइभ माने सिगांनि एमपि आरो दानि एमपिजों कम्पेरिजन खालामना नायनो हागोन प्लास बेजों लोगोसे स्ट्रंयैहाय आवाज होनाय मणिपुरनि एमपिखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय सोरबा सासेखौ ब्लेम होनाय बा सोरबा सासेखौ माबा मोनसे बुंनायनि थाखाय आङो भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै एक्चुअली जोंनियावहाय एमपि होननानै बुङोब्ला बिथांनि सायावनो माखासे गोबां खामानिफोरा हाबनानै थायो जोंनि माखासे नैबेयावनि जानाय जायि माखासे थाबथानानै थानाय मानाय आरो जोंनि माखासे गोबां खामानिफ्रा माबायदि सोलिनानै दं बेयो नैबे एमपिनि थ्रुदिनो जानानै फैयो दा नैबे बिथिङावहाय जोंनि एमपिया माबायदि पार्लामेन्टआवहाय सोमावग्लुंदों आरो माबायदि नासयजादों माबायदि बुंजादों जोङो नुनो मोनदों स्पिकारावहाय जोंनि अदालगुरि बियाबनिफ्रायनो दैथाय हरजानाय बेखौ गोबाङानो मिथिगौ बियो जिरायनानै दंहैयोमोन ओमफ्राय बेखौहाय माब्रै जोंनि बिटिसिनि क'क्राझार कनस्टिटुएन्सिनि जे एमपि नैबेखौहाय माबायदि खालामदों बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुजिनो मोनगोन आरो आगुआवहाय रायजो सभायावहाय जोंनि एमपि दंहैयोमोन मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा माबायदि बाथ्रा बा आवाज होदोंमोन बै समाव बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन आरो लोगोसे मणिपुरनि जे एमपि बिनि स्ट्रं बाथ्रा बुंनायखौ खोनानो मोनगोन चलो आङो टाइमखौ वेस्ट खालामनो सानासै जोङो खोनासंदिनि आरो नोंथांनि बुजिनायनिफ्रायबो कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना फोरमायहरोब्लानो जाबाय धन्यवाद सर मैं आपके जोड़िए इस हाउस में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ जो 40 लाख 7,707 दीजिए वहाँ का है वो ये जो एनआरसी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है ये कोई एदाल या फैमिली का नंबर नहीं है वो जिस दिन एप्लीकेशन किया है उसी दिन जिन्होंने जन्म भी लिया उनका भी यहाँ पर है तो इसमें कोई बढ़ने का कोई मौका नहीं है आज के जो ये है ये संख्या ही है एक फैमिली का सबसे छोटे बच्चे तो इसी में है 40,07,707 वो कोई बढ़ नहीं सकता है वो कोई फैमिली नंबर नहीं वो एडल नंबर नहीं है जो भी छोटे बच्चे हैं उनका भी नाम ये इंक्लूड है तो इसको मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं और इसी में कुछ बहुत सारे असमीज लोग भी हैं जो हमारे नियरेस्ट राज्यों से भारत की किसी भी राज्यों से शादी हुआ है उनके लीगेसी डाटा टाइम पे उसी राज्यों से कोई ऑफिसर्स ने इशू कर नहीं पाया इसके कारण ये लोग ड्रॉप आउट हुआ है जो 40,07,707 में है जो कि 2-3 महीने के अंदर अगर हर स्टेट असम की इस विषय को सीरियस लेकर उन लोगों का जो लीगेसी डाटा है जैसे हमारे मैडम ने कहा कि एक शादी हुआ है असम में तो उनके विषय पर असम गवर्नमेंट से वहां के जो लोकल ऑफिसर है उनके डिटेल्स मांगा गया है लेकिन टाइम पे वो लोग दे नहीं पाया है ऐसे बहुत सारे इश्यूज है तो एनआरसी जो हो रहा है देखो मैं असम से हूं इसलिए साधारण तक मांगा है असम के लोगों ने अगर इंडिया के कोई भी राज्य टॉलरेट नहीं करता है इस विषय को तो छोड़ दीजिए नोटिस को असम को छोड़ दीजिए मैं अकेला हूं छोड़ दीजिए प्लीज हमारे यहाँ पर बोलने का कोई मौका नहीं है अपना बात रखने बात रखने का हमारा कोई मौका नहीं है भाई प्लीज डोंट प्रोवोक अदर्स किसी भी भारतीय नागरिकों को यहाँ बैठ जाइए नेशनल माने रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट से बाहर करने का वहां पर कोई नहीं चल रहा है सर वहां पर जितना भी भारतीय है
एनआरसी में सबका भी नाम अपडेट हुआ है। जो भी अपडेट नहीं हुआ, शादी होके किसी ने बाद में जाके जो उनका डिटेल्स मांगा, वो दूसरी स्टेट से टाइम पे उनका रिपोर्ट नहीं गया है, इसलिए उनको अभी रुका गया है। Thank you. और ऑलरेडी Conclude. घोषणा क्या है, हमारे जॉइंट क्या है, नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज जॉइंट सेक्रेटरी होम वो भी मौजूद थे। ये 40,07,707 के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। और ये 40,07,707 फिर से वो लोग एप्लीकेशन कर सकता है, अपना कागज से सबमिट कर सकता है, और अगर ये सही तरह से सब दे सकता है, वो लोग फिर से रजिस्टर हो जाएगा। तो इसमें कोई शंका होने की बात ही नहीं है। और इसीलिए आसाम में आज इस विषय को लेकर कोई झगड़ाबाजी नहीं है, कोई संग्राम नहीं है, सबको भी विश्वास है जो रह गया उनका फिर से वहां पर अपडेट हो जाएगा जब वो टाइम पे सारा कागज दे सकता है। तो इसके लेकर शंका होना नहीं चाहिए। And social harmony may not have a definite address. Speech. Sir, Sri Umesh Patel. sir, Umesh Patel. हमको माने सर ऑल पार्टी मीटिंग में 7 मिनट्स का बात कह गई थे सर। Time Please, कम sir. है अभी Please sir. Please 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। 30 सेकंड प्लीज। Sir, 30 please. सेकंड। Sir, I hope that if the proposed 125 amendment is passed along with the amendment in Article 280, the sixth schedule will be strengthened with considerable financial powers and autonomy to administer governance effectively in the councils. Thank you. Sir, Thank you. Sri Umesh Patel. Please, sir. Sir, 1 minute, sir. No, sir, please. I must Conclude, express please. my gratitude to our Sri Umesh Patel. visionary leader. धन्यवाद महोदय जी, मुझे पवित्र ग्रंथ संविधान पर Mr. Chairman, sir, thank you. I am from a village in the far northeastern state of Manipur. My village is called Shangshak. In the spring of 1944, when the Great Second War reached that part of the country, my village was where the Battle of Shangshak took place for a week. Hundreds and hundreds of Allied forces as well as Japanese forces, they lost their lives there. It was the Battle of Shangshak that ensured that Allied forces could reach Kohima in time so that the onslaught of the Japanese could be stopped. Sir, the nation was built 1950, as we all know, the Constitution was adopted, enacted. That part of the country, we never knew what was being discussed. Our people never ever knew what was happening in these great halls, what our founding fathers were discussing for the welfare and the future of that part of the country. Many amendments were required. One such amendment that happened in '63 was Article 371A for the state of Nagaland. In 1971, Article 371C for the state of Manipur. It was because at the time in 1949, when the Constituent Assembly discussed the Constitution, many parts of our nation were left out. Our nation is a plural nation. That is the belief that we had grown up with. We have studied our whole lives that this nation is a nation that constitutes pluralism. The core and identity of our nation is the plurality that this nation exudes so proudly. Why is it today? I have seen many eloquent speakers. I am grateful across both sides of this house. You have spoken on the Constitution. Where was the Constitution on the 4th of December 2021 when my armed forces, special forces of the 21 Special Force Paras, they killed 6 civilians who had gone to work in coal mines, coming back home to their families. Because you had cut down the budget for Narega, they did not have a source of income that they had to go and work in the coal mines on the way back. The best of our forces, the 21 SF, they mowed down 6 unarmed civilians. Yet, in the aftermath of that, another 8 more civilians were killed in Nagaland, in Otig. What did this government do at that point in time? This country should hang its head in shame. Why? Because you, yes, to assuage the villagers of Oting, you nominated
a very good friend of mine as the Rajya Sabha MP from Nagaland. Presently, she's the MP representing Nagaland, and her name is Phangnon Konyak, a well-deserved lady from Uting. Is that enough for the families that have lost their lives to my armed forces? Did not this nation and this people and this house at least stand up in unison, condemning that? At least I expected our Raksha Mantri to have stood up and said that we owe responsibility to whatever wrong happens, and it is our own people that we have assassinated, and for that we mourn. Till date, that is missing. Are we not a part of this nation? I ask you, Speaker Sir. Mr. Chairman, 3rd of May, 2023, I need not remind this House or this nation what happened in my state of Manipur. What has been happening for the last 19 months? The last time I got to speak in this August House, I very clearly said, as a citizen of this nation and as a family that has contributed in building this nation, it is my right to ask for justice. Why is it till today that my Prime Minister, someone who this nation believes, someone who I also wish to believe, why is it that till date he is not answerable to the people of Manipur? Why? Is it too much? Is it too much for me to ask on behalf of those civilians that have elected me here today? Sir, Mr. Chairman, sir, those children, those women across communities, they have lost their lives. They cannot be victimized for a cause for which this nation or the state cannot handle. Is my nation so weak that you cannot protect the lives and property of the civilians there in Manipur, sir? I beseech the conscience of this House. Thank you. We have so many eloquent speakers, sir. I'm closing. Sir, I'm closing. Please, please. Sir, in the end, I wish to beseech upon the conscience of this House, especially all the honorable members of the ruling bench. This is not a war against either party, be the treasury or the opposition. This is a war against humanity in this country. Please, wake up, speak to your people. All you have to do is see how difficult is it for our nation, which is growing and going to become the 3rd largest economy. You talk only of economy, but when you are finished of people, what will that economy do when there are no people to use it? I ask the conscience of this House and the leadership of this nation, please today stand up, be with your brothers and sisters in Manipur, bring about justice and be accountable for all actions. Thank you, Speaker.